Hello students, I am Ankita Nanavati and welcome to my channel. Today I am going to explain you a lesson, A Truly Beautiful Mind, that is from Beehive class 9. First I am going to give you the introduction and first I will read the lesson line by line and I will explain that, and after that I will give the overview. In this I have mentioned introduction, character sketch, achievements and the basic few things which are very important. Okay, so coming to the introduction. This story shows Albert Einstein as a human being, a fairly ordinary person. His likes, his dislikes, his tricks of rebellion. It also traces journey from ordinary to the extraordinary. Now, I am going to explain this lesson from NCERT line by line. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. Without any indication that he was destined for greatness, on the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. So अल्बर्ट आइंस्टाइन का बॉर्न हुआ था 14 मार्च 1879 में उल्म सिटी जो कि जर्मनी में है. जब वो बॉर्न हुए तो वो एकदम नॉर्मल थे, बट कॉन्ट्ररी ऑपोजिट टू दिस उनकी मदर को लगता था कि वो एक फ्रीक थे. दैट फ्रीक मीन्स अनयूजुअल पर्सन. तो उनको उनकी मदर को आइंस्टाइन का हेड बहुत बड़ा लगता था. Second paragraph. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" So, at the age of 2.5, still Einstein wasn't talking. वो कुछ बोल नहीं पाते थे. वो late talker थे. And he finally did learn to speak. He uttered everything twice. वो हर बात को 2 बार बोलते थे. तो जो उनके क्लासमेट्स थे, उनकी एज के बच्चे थे, उनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं थे और बाकी बच्चे उनको ब्रदर बोरिंग कह के बुलाते थे. सो द यंगस्टर, वो जो बच्चा था, मतलब आइंस्टाइन एज अ चाइल्ड, वो ऑलवेज टॉयज के साथ जो खेलती थी वो मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलते थे. एंड जब उनकी न्यूबॉर्न सिस्टर हुई माजा, तो उन्होंने ये कहा था कि इसके व्हील्स कहाँ थे, बिकॉज वो हर एक चीज को मैकेनिक के फॉर्म में देखते थे. तो उनको ये लगता था कि उनकी सिस्टर भी एक टॉय है, तो उसके व्हील्स कहाँ है. दैट वाज हिज क्वेश्चन. Third paragraph. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. हेडमास्टर ने उनके फादर को एक बार स्कूल में बुलाया और उन्होंने कहा कि वो कोई भी प्रोफेशन करे चूज, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे. क्योंकि उनका बिहेवियर जो था वो स्कूल में भी उस टाइप का था कि सबको लगता था कि he can't do anything, but he became a great scientist. Einstein began learning to play the violin at the age of 6. Because his mother wanted him to, he later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. 6 years की एज में वो वायलिन बजाना शुरू किया था. जो उनकी मदर को था कि अगर ये पढ़ने में अच्छा नहीं है और टीचर्स ये कहते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, सक्सेस मिल नहीं पाएगी, तो बेटर है कि वो कोई और में इंटरेस्ट क्रिएट करे और वो कुछ और बने. तो उनकी मदर ये चाहती थी कि वो वायलिनिस्ट बने एंड वो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम तक ये अपनी हॉबी को मेंटेन किया. Fourth paragraph. But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. जब वो 15 मंथ्स के थे तब उनकी फैमिली म्यूनिक में शिफ्ट हुई थी, तो वहां पे वो स्कूल में जाते थे. वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. वो बुरे स्टूडेंट नहीं थे. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good. उनको वहाँ पे भी comfortable feel नहीं होता था टीचर्स के साथ, तो फाइनली उन्होंने 15 इयर्स की एज पे स्कूल को छोड़ दिया था फॉर गुड. मतलब और कुछ अच्छा करने के लिए उन्होंने स्कूल छोड़ दी थी. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. तो अगले ही साल, मतलब 15 इयर्स के थे उसके पहले के साल में उनके पेरेंट्स मिलान में शिफ्ट हुए थे और उनको छोड़ दिया था रिलेटिव्स के पास.
After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. तो वो उन्होंने अपनी विश की और वहाँ पे जाना चाहते थे और वो वहाँ पे गए. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. Now क्या होता है, वो पहले से ही उनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट तो था, वो बहुत अच्छे थे, राइट, गिफ्टेड थे, बट उनको फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट था. और देखो वो बने भी ग्रेट साइंटिस्ट ड्यू टू द फिजिक्स. सो उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट था वो उन्होंने छोड़ा नहीं, राइट. हमें भी अगर किसी चीज में कोई इंटरेस्ट है तो वी शुड नॉट लीव दैट, ओके. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marik, whom he found to be a clever creature. तो सिर्फ साइंस नहीं, उनको और चीजों में भी इंटरेस्ट था. ऐसा ही इंटरेस्ट था उनको अपने फेलो स्टूडेंट में, कंपेनियन में, जिनका नाम था मिलेवा मैरिक. और वो सोचते समझते थे कि शी वॉज वेरी क्लेवर क्रिएचर. दिस यंग सर had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो इसीलिए वो आए थे कि ज्यूरिक से, वहाँ पे मतलब एक यूनिवर्सिटी एक ही थी जहाँ पे विमेन को डिग्रीज मिलती थी. सो दैट ही केम देयर बिकॉज उनको विमेन में भी इंटरेस्ट था. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. So Mileva and Einstein fell in love in the university. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein. अब आइंस्टाइन ये लिख रहा है लेटर में, जो वो मिलेवा को लेटर्स लिखते थे उसमें उन्होंने ये लिखा था. How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. मतलब अगर हम अपने रिलेशन को कोई कंक्लूजन पे ला पाए, क्योंकि लेटर ऑन एक आएगा कि रिलेटिविटी पे ही उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी, राइट. वो भी आगे लेसन में आएगा. तो उन्होंने उसी साइंस की लैंग्वेज में उनको ये बताया था कि अगर हमारी रिलेशनशिप भी एक कंक्लूजन पे आए विक्टोरियस, तो इट वुड बी ग्रेट. नाउ कमिंग टू द 8th पैराग्राफ. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. जब 21 साल की उम्र में वो ग्रेजुएट हो गए, पर वो अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास कोई भी काम नहीं था. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. तो 2 साल के बाद फाइनली वो टीचिंग करते थे, प्राइवेट लेसन्स देते थे, और 2 साल के बाद फाइनली उनको टेक्निकल असिस्टेंट की एक जॉब मिल गई. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. मतलब वो क्या करते थे, लोगों के आइडियाज के साथ वो सीक्रेटली अपने आइडियाज पे भी वो काम करते थे, एंड उसी वजह से वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए थे. 9th paragraph. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. दोनों एब्सोल्यूट नहीं होते थे. एक ऐसा पेपर मिला था 1905 में, कंटिन्यूटी में लेसन में जब ये चीज आएगी कि उन्होंने ये पब्लिश किया था 1915 में, तो आफ्टर 10 years, राइट. बट उन्होंने ये शुरुआत की थी 1905 में वर्क ऑन करना. In it, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. तो उन्होंने ये साइंस का मतलब फिजिक्स का एक लॉ यहाँ पे सिखाया था, रिलेटिविटी का, उसी का ये कंक्लूजन था. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy, and that is E is equal to mc square. तो ये जो फॉर्मूला दी थी उन्होंने वो उसी पे वर्कआउट कर रहे थे, बट वो पब्लिश हुआ था आफ्टर 10 years of this after this 1905. Coming to the paragraph 10. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. उस टाइम प्राइवेट लाइफ भी उनकी कुछ ज़्यादा से डिस्टर्ब से हो रही थी, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे. Now what were the problems? That problems we are looking at in this paragraph.
Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. जब से स्टडीज खत्म हुई तब से वो मिलेवा से मैरिज करना चाहते थे, but his mother was not agree with him. But his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. तो क्या हुआ कि जैसे आइंस्टाइन पहले भी कहते थे कि वो मिलेवा को एक क्लेवर क्रीचर मानती थी, राइट? तो शी वाज वेरी इंटेलिजेंट और एंड शी वाज 3 years ओल्डर देन आइंस्टाइन. तो उनकी मदर को ये था कि एक तो ये 3 साल बड़ी है और उससे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो एक बुक कवर जैसा रहेगा. तो शी वाज अगेंस्ट हिम, राइट? तो ये था उनकी प्राइवेट लाइफ की प्रॉब्लम, बड़ा सा प्रॉब्लम जो उनकी प्राइवेट लाइफ में था. कमिंग टू पैराग्राफ 11. The pair finally married in January 1903. So, after all this problem, they got married in 1903 and had 2 sons. But a few years later, the marriage faltered. मतलब problems शुरू हो गए. 1903 में उनकी marriage हुई, उनको 2 sons भी थे and after that, their marriage got many problems. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. वो अपने जो कैरियर से वो आउटग्रोथ हो रही थी एंड शी वॉज लाइक एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन रही थी. After years of a constant fighting, the couple finally divorced in 1919. तो 1903 में उनकी वेडिंग हुई एंड 1919 में, so after 16 years they got divorced. Einstein married his cousin Elsa the same year. 1919 में ही सेम ईयर पे एल्सा से उन्होंने सेकेंड टाइम मैरिज की. नाउ इफ यू रीड एनी बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी ऑफ आइंस्टाइन, एल्सा के बारे में बहुत डिटेल्स दी हुई है. शी वॉज वेरी सपोर्टिंग एंड आइंस्टाइन के लिए वो बहुत ही, आइंस्टाइन उनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल थे एंड उनके हर कैरियर में एल्सा ने सपोर्ट किया था. तो यू कैन रीड इन एनी ऑफ द बायोग्राफीज. कमिंग टू द पैराग्राफ 12. Einstein's new personal chapter coincided with his ride to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new introduction of gravity. उन्होंने gravity का जो 15 में publish हुआ वो related to gravity वो interpretation दिया था. An eclipse, ये उसका example है. An eclipse of the sun had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. तो ये जो उन्होंने ग्रेविटी से रिलेट करके बताया, उस चीज की वजह से न्यूज़पेपर में ये हेडलाइंस आती थी कि दिस इज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. तो उन्होंने एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन लाया उनकी ही एक खोज में, जो कि उन्होंने थ्योरी लिखी थी 1905 में एंड पब्लिश हुई थी 1915 में. उसकी वजह से पूरा साइंस में एक रिवॉल्यूशन आया था. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. See, उनको नोबेल प्राइज मिला 1921 में for physics. Now he was gifted with mathematics, right? Maths and physics are very much interrelated, and physics was his subject of his interest, and he got Nobel Prize for his interest, not the thing which he had gifted by the God, right? So if you have any type of this hobby, हमारे में भी कोई हॉबी होती है और हमें लगता है कि हम इसको आगे तक ले जा सकते हैं, तो we should do that, right? We should do that. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. तो सब जगह से उनको बहुत ज़्यादा फेम मिला था. Now this is very important paragraph 14 and 15, 16, 17 up to from 14 to 17. This will show about the atom bomb and about Hiroshima and Nagasaki and all these things. Okay. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. वो US शिफ्ट हो गए. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. तो वो बहुत ज़्यादा ऑपोज कर रहे थे नाजिस का. यहाँ पे पावर ज़्यादा, नाजिस हिटलर का पावर आपको एसएसटी में आप पढ़े होंगे, हिटलर का पावर था और एक वहाँ पे लोग अफ्रेड भी होते थे, राइट? तो वहाँ पे वो उनको एक डर था कि कहीं एटम बम का यूज ये लोग ना कर दे बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस. तो ये एक चीज थी एटम बम के रिलेटेड. At the
urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt. उन्होंने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939, तो उन्होंने उनको एक लेटर लिखा था in which he warned, उन्होंने वार्न किया था कि a single bomb of this type exploded in a pot might very well destroy the whole pot together with some of the surrounding territory. Now यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री का अगर नॉलेज हो तो हम ये बताऊंगी मैं आपको कि 1939 में पर्ल हार्बर के बारे में ये बताया गया था कि उन्होंने ये बताया है कि एक बॉम्ब गिरा था और कितना डिजास्टर्स हुआ था, राइट। तो उन्होंने वार्न किया था कि एटम बॉम्ब इज वेरी मच डिजास्टर्स. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. ये यहाँ पे रिवर्स इफेक्ट हुई और अमेरिका ने एक सीक्रेटली ये मिशन शुरू किया और अपना खुद का एक एटम बॉम्ब बनाया and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. ये जो बॉम्ब गिरा था अभी भी उसकी इफेक्ट हमें देखने को मिलती थी. वो इफेक्ट मतलब ये बॉम्ब डाला था 1945 में, तो इस वक्त उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था कि आइंस्टाइन was deeply shaken by this incident. And this time अब उन्होंने UN में लेटर लिखा. This time he wrote a public missive letter to the United Nations. In it he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. इसका कोई impact नहीं दिखा, कोई असर नहीं हुई. But over the next decade, Einstein got even more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. तो आइंस्टाइन यहाँ पे उन्होंने UN में लेटर लिखा बट कोई इफेक्ट नहीं हुआ, राइट. तो उन्होंने खुद को क्या किया, अपना एक वो फेम था उनके पास, तो उन्होंने अपना फेम यूज करके कैंपेनिंग शुरू की फॉर द वर्ल्ड पीस. ओके, पीस के लिए उन्होंने और डेमोक्रेसी के लिए वो फोर्स कर रहे थे. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो उनको उनकी डेथ हुई थी 1955 में at the age of 76 and it was celebrated as a visionary and world citizen day. Okay, now in the coming part I am giving you the overview of this chapter, so keep watching, continue with this lesson. Thank you. In earlier video, I had given the explanation of the lesson, A Truly Beautiful Mind. And in this video, I am going to give the overview of this chapter, in which I have included introduction, character sketch, achievements, and some few points with the message of this story. So coming towards the introduction. This story shows Einstein as a human being, a fairly ordinary person who has his likes and dislikes, his streaks of rebellion, and it also traces journey from ordinary to extraordinary. So this is the introduction of the lesson. Now character sketch. Einstein, whose born year was 14/3/1879. He was born in Ulm in Germany. He was a late talker. 2.5 years की एज के टाइम उन्होंने बोलना शुरू किया था. He was highly gifted in mathematics, but physics was his favorite subject also. He became a violinist. He started playing violin at the age of 6. He had done 2 marriages. First marriage was in 1903 with Minerva, who was his classmate, and second marriage in 1919 with Elsa, who was his cousin. So this is his personal life. Now coming towards the achievements. He has given the world's most famous formula, E is equal to mc square. He has given the theory which was published in 1915, published in General Theory of Relativity, which was a new interpretation of gravity. He was honored by the Nobel Prize for Physics in 1921. In 1945, when Americans had dropped the atom bomb on Hiroshima and Nagasaki, his heart was shaken, and after that he has started campaigning for the universal peace and the democracy. He died at the age of 76 in 1955.
So these are the basic points for this lesson. Message, this story gives two messages. First is universal brotherhood, मतलब कि हमें मिलजुल के रहना है, लड़ाई नहीं करनी है और पीस से रहना है. एंड सेकेंड, दिस स्टोरी मोटिवेट्स टू परस्यू द ड्रीम्स. दैट मीन्स कि हमें अपनी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए मोटिवेट कर रहा है ये लेसन. सो दीज आर टू मैसेजेस ऑफ दिस लेसन. Students, if you like my teaching, kindly like, share, comment and subscribe. Thank you.